स्टोरी सीधी तो नहीं है वरुण कि धनबाद से निकला और सीधा मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी जब मैं 15 साल का था। एक तो नजर आई कि वो बहुत अमीर है और दूसरा वो बहुत खुश है। व्हाई डिड आई इंक्रीज माई एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट? अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं उस अच्छे को एंजॉय क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो जर्नी एंजॉय करनी बहुत जरूरी है। Do you still believe that VC is actually a very promising career? If you're not enjoying it, my point is you're not going to make money. इनकम हुआ नहीं, उसके पहले हम लाइबिलिटीज खड़ी करने शुरू कर देते हैं। गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5-6 साल नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार कहा कि कोई गांव ऐसा ना हो जहां पर स्टार्टअप की शुरुआत ना हो। पर आप जानते हैं ये स्टार्टअप को फंडिंग कौन करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। और ऐसे ही एक वेंचर कैपिटलिस्ट आज हमारे साथ हैं, अरविंद अग्रवाल। हाय अरविंद, वेलकम टू आवर शो। हाय वरुण, थैंक यू। अरविंद, धनबाद से एक लड़का निकला, एक गाड़ी में बैठा और सीधा यूरोपियन वेंचर कैपिटल फंड का ग्लोबल सीईओ बन गया। क्या स्टोरी है इसके पीछे? स्टोरी सीधी तो नहीं है वरुण कि धनबाद से निकला और सीधा यूरोपियन वीसी ज्वाइन कर लिया। बहुत लंबी जर्नी है और बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी जब मैं 15 साल का था। आई जस्ट 15। सो बहुत छोटे से गांव, टाउन बोल सकते हैं वहां से। तब कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और तभी एक वीसी का एक आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर में। उसमें एक फंड मैनेजर था, वीसी फंड मैनेजर, सूट टाई वगैरह पहना हुआ था, बहुत खुश था। तो मुझे दो चीज नजर आई उस फोटो में। एक तो नजर आई कि वो बहुत अमीर है और दूसरा वो बहुत खुश है। मुझे उस वक्त वो दो चीज चाहिए थी। तो और कुछ पता नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया मुझे वीसी बनना है। ठीक है, पर ये भी नहीं पता था कि बनना कैसे है। तो जितनी समझ थी उस हिसाब से 15 साल की उम्र से प्लानिंग करना शुरू किया कि हाँ, अगर वीसी बनना है तो वीसी इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स है तो फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, तो अकाउंट्स ही करना है। आप इंजीनियरिंग करके वीसी नहीं बन सकते हो। इस टाइप के कॉन्सेप्ट थे, विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट प्रॉपर बुक्स टू रेफर टू। सो उस हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, धनबाद से आने पर 15 साल की उम्र से चल रहा है। मैंने अपना स्कूलिंग हो या अपना ग्रेजुएशन हो या अपना एमबीए हो या उसके बाद का जॉब्स हो, वो भी पूरा प्लान करके कि धीरे धीरे। मैं कोई बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट तो था नहीं। आई डोंट कम फ्रॉम आईवी लीग कि मुझे वीसी में एंट्री मिल जाए। बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट। तो मेहनत ज्यादा करनी थी। तो फिर वीसी बनने के लिए डायरेक्ट कोई वीसी तो मुझे हायर करेगा नहीं। तो पहले केपीओ से स्टार्ट किया, फिर कैप्टिव यूनिट में गया, फिर वीसी में एंट्री मिली। लंबी जर्नी रही, बहुत मेहनत रहा और प्लानिंग करनी पड़ी। गलत या सही प्लानिंग थी, बट प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अराउंड सेम टाइम 15 साल की उम्र में मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ इस वजह से वीसी बनता और 15 साल की उम्र से शुरू कर देता, तो मैं भी शायद वो टिपिकल वीसी वाला ऑरा होता या वो लाइफस्टाइल आ जाता, वो एटीट्यूड आ जाता, वो घमंड आ जाता। बट एक और इंसिडेंट हुई उस वक्त which I think is has shaped who I am today, right? So बिकॉज मुझे अपना लाइफ पाथ समझ में आ गया था कि हाँ, वीसी बनना है। तो उस वक्त मैंने पढ़ाई पे थोड़ी ध्यान देना शुरू किया। बिफोर दैट आई वाज अ रियली बैड स्टूडेंट। आई मीन आई यूज्ड टू फेल इन मोर सब्जेक्ट्स देन आई यूज्ड टू क्लियर। सो पहला 3 टर्म्स होते थे हमारे। पहले टर्म्स में काफी अच्छा किया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गई। तो मुझे एक साइकिल चाहिए थी। तो आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड कि पापा एक साइकिल चाहिए। बोले पहले पढ़ाई में ध्यान दो, साइकिल चाहिए तुमको। नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया एंड गेव हिम द रिपोर्ट कार्ड। तो उसमें क्या था, रैंकिंग करते थे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, पूरी रैंकिंग करते थे क्लास में। तो मेरी 8th रैंकिंग थी। सो माय डैड सेड, या तुम 8th आए हो, टॉप 3 में हो तो साइकिल ले लेना। आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसा ठीक है, नेक्स्ट टर्म में मैं फर्स्ट 3 में आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम साइकिल ले लेना। तो सेकंड टर्म हुआ, मेरे रिजल्ट वाले दिन मैं एक्चुअली 5th आया एंड आई वाज रियली सैड। आई वाज नॉट हैप्पी दैट मैं 8th से 5th आ गया हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बट आई वाज रियली सैड कि मुझे साइकिल नहीं मिलने वाली है। तो वैसे ही उदास मैं स्कूल से निकल रहा था और देखा मेरे शॉप में एक काम करते थे, वो बाहर खड़े हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ?
He said, आपके फादर ने बोला है कि आपको डायरेक्ट शॉप लेके आपको साइकिल दिलाएंगे. Now all of a sudden I was very positive. I was very happy, right? मैं फिफ्थ आया, एट्थ आया, मैंने पढ़ाई पे अच्छा किया, कोई मतलब था, मुझे साइकिल मिल रही थी. I was very very happy. And then I reached the office. My father, उन्होंने हाथ बढ़ाया कि रिपोर्ट काट दो. मैंने रिपोर्ट काट दिया. उन्होंने देखा, वापस किया, उसको बोला जाओ उसको घर छोड़ा. ठीक है. And I was like, why did I increase my expectation because of that one incident? I knew I shouldn't get the cycle because I didn't deliver the promise. But because of that one incident, expectations बहुत high हो गई. तो उससे काफी बुरा लगा कि मैं unnecessary, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं उस अच्छे को enjoy क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसका end result एक साइकिल क्यों होना चाहिए? या कुछ भी क्यों होना चाहिए? The journey should be more important than you aspire for a bigger house, you aspire for a car. तो उस दिन तो खैर नहीं समझ में आया था, लेकिन that changed something in me where it was no longer about if you are in a VC and if you earn money, this is what you should get: a bigger house, a car, a lavish lifestyle. I started enjoying the journey, and which is why today I don't own a car, I don't have a house, I don't have any immovable or movable property, yet I'm very happy. Arvind, but this is oxymoron, right? A VC doesn't have a car, a VC doesn't have a lavish lifestyle, and all the VCs are known for money they make, the life they enjoy. No, it just be, I don't want to own it. And I'm not saying that, expecting a bigger house or a bigger car or more luxurious car is a wrong thing. It's a personal choice. What I mean to say is कि आपको वो journey enjoy करनी बहुत जरूरी है. If you can't enjoy the journey, your end goal, you're not going to meet. Particularly, at least from my experience in my sector, I can tell it's a cutthroat competition. The rate of failure for a VC is much higher than rate of success. You have to enjoy every bit of it. So I think if you enjoy, and that's my personal choice, that I enjoy the journey working with the promoters, trying to find out कि कौन सी कंपनी अच्छी करेगी, नहीं करेगी. और ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप बैठ जाओ और वो कंपनी बहुत अच्छी करेगी. There is a lot of hard work which goes after investing in a company, and you have to enjoy that moment. If you feel कि हाँ आज मैंने इन्वेस्ट किया और इसमें 10x रिटर्न आना चाहिए, तो मैं इन्वेस्ट करके बैठ जाऊंगा कि 10x रिटर्न कब आएगा. तो मजा कहाँ आया? So you mean to मजा say VC as a career is lucrative or not lucrative? So there are a handful of funds in India, or maybe globally for that matter. Very handful of people work in one fund. So very limited opportunities for the finance professionals. Do you still believe that VC is actually a very promising career? I do. I mean, again, I would say it all depends on कि आपको मजा किसमें आता है. ठीक है. वीसी में पैसा बनता है, हाँ बहुत पैसा बनता है इफ यू आर सक्सेसफुल. वीसी में ऐसा भी होता है दैट यू गो बस्ट इन टर्म्स ऑफ योर फंड डोंट परफॉर्म वेल. लेकिन if you're not enjoying it, my point is you're not going to make money. Okay, so you have to enjoy it. अगर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर इज कि वीसी में जाएंगे बहुत पैसा बनेगा, so I would say stay away from a VC career because it's not for everybody. It takes a part of your soul. On that note, let me ask you the dark side of being a VC then, Arvind. Lot of things, Arun. Before answering that question, I'll ask you. See, tell me, if you want to be an entrepreneur, what is the minimum education qualification that you need? Nothing. Is the passion, is the idea, and then of course blessing from VCs like you ultimately. That, and I mean, there are a lot of examples where they have not raised funding companies and that they have done really well. What type of corporate experience do you need to be an entrepreneur? Again, nothing. I have seen 19-year-old running a startup, successful startup. So of course, no corporate experience is a precursor. Can you be an entrepreneur at 25? Of course, 25, 85, 65. Age is not a criteria there as well. Tell me, name a VC fund manager who is a college dropout. On the top of my head, I don't recall anyone. But let me ask you a question: Is this my interview or it's your interview? No, I am trying to just pass on a message to everybody who feels that VC है यार, इसके तो ऐश है, बड़ा पैसा बनाता है, larger than life, luxurious life, and attitude है, this and that. It takes
A lot of hard work. I feel being a fund manager is the toughest form, or one of the toughest form of entrepreneurship. You cannot, not have a degree. You cannot not have corporate experience. Have you seen a 20-year or a 25-year-old VC fund manager? No, I haven't. There No. might be some at junior level, associate level, but yes, not Yes, general but a public. partner I'm talking of, Yeah. you won't see. So education बहुत important होता है. वहाँ पे important होता है that you have good experience in your corporate life, right? By the time you aspire or you can become a VC partner, you are 35 or 40. You should have 10, 15, 20 years of experience. And then you get to start your own fund. Okay. Now you are very much an entrepreneur at that time. You started your own company. Unfortunately, VCs, and this, I believe we have to take the blame for it. VCs allowed themselves to be called an investor. We're not an investor. We are fund managers, right? Who are trying to be an entrepreneur and try to build a company whose business is helping other companies, right? But because of this positioning, VC को कोई entrepreneur मानता ही नहीं है. So the dark side is it's a thankless job. You are not treated as an entrepreneur. Okay, whether you have the attitude or not, you are painted with the same brush. कि अरे VC है, इसका क्या जाता है? So बहुत कुछ जाता है, startups opportunity watching जाता us today, please take a note that same kind of struggle VCs को भी है. सिर्फ आपको struggle नहीं है. Even more. Why same? That's what I'm saying. I need to have a proper education. I need to have proper corporate experience. I need to be of a. I have never seen a fund manager, a partner who is lesser than 35. Right? 10 साल का experience तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको partner बनना है तो. So, Arvind, it is very tough. When the failure rate is so high and many startups don't perform as per the expectation of the VC fund manager, and if the fund is not successful, you are not able to get money, make money for your investors, there is no good place for you to go after being a VC. Then why to enter in this space? Why do you think it's still a charming profession? Let me guess. I mean, for a few people, it's money. For few people, it's the way you are treated, right? Everybody looks up upon a VC in terms of lifestyle and yeah, क्या attitude है, maybe that. Or third, somebody just enjoys it, like me. I just enjoy it. The journey itself is so fun. I mean, in a lifetime, Varun, you will probably, start one company, two or three. We get to work with, hundreds of entrepreneurs day in, day out. So How do how you can that assess a not be a startup, challenge? Arvind? How do you assess a startup or a new idea? Do you have to be good at psychology as well? Meeting a startup founder, आप कैसे जज करते हैं कि ये फाउंडर मुझे पैसा बनाकर देगा? See, honestly, nobody knows कि कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा. Idea is an idea. कल मार्केट में क्या होगा उतना पता नहीं होता है. When we talk about startup funding, I think the single most important factor is the promoter. When you have that first meeting, क्या आपको comfort आ रहा है उस promoter के साथ? Right? Can you work with him or her for the next 5, 6, 7 years? अगर वो ट्रस्ट फैक्टर और वो कंफर्ट आता है, एंड देन ओवरऑल यस, बिजनेस समझ में आना चाहिए. आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रमोटर को भी बिजनेस समझ में आ रहा है, नॉट बीइंग ओवरली एक्साइटेड अबाउट इट. सो वो सारी चीज आई वुड से 50% इज कि प्रमोटर के साथ आपकी ट्यूनिंग हो रही है कि नहीं. 50% एवरीथिंग एल्स, एंड देन यू बेट ऑन द प्रमोटर, right? And then both of you try to make it work. Yes, the promoter of the company does a majority of the heavy lifting. लेकिन आप as a board, if you are equity investor or as a guide, as an advisor, you try to help. So it's more about the promoter, because early stage में everything else is very fluid. Okay. अरविंद, थोड़ा सिंपल करते हैं कॉन्वर्सेशन को. काफी सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हमारे शो को फॉलो करते हैं. एक वीसी फंड में व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स डू यू हैव? क्या क्या तरह की हायरिंग करते हैं और क्या क्या आप देखते हैं उस कैंडिडेट में हायर करने से पहले? तो मैं
I'll focus on investment team as such. The entry level जो job होता है कोई भी professional के लिए who want to make a career in VC is an analyst. So then there is a whole lot of steps you need to take. You are analyst, you become senior analyst, associate analyst, senior analyst में बहुत learning होती है. You are doing lot of data collection, analysis. फिर आप associate जब बनते हो, associate you could see the bridge between you become investment manager or principal as we call it, or the analyst. So यहाँ पे you actually go to the next step where you are taking meetings, you are trying to source transactions और आप उन transaction को close करने की भी कोशिश कर रहे हो. Once you get the comfort, you become a principal, or in easy language, investment manager. And then again, you need to spend quite a number of years to be a successful investment manager. And that's when a partner बन सकते हैं VC में. For a partner, you should be in a position जहां पर आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है और आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे इन्वेस्टर्स आपके फंड में पैसे देने को तैयार है. So जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हो, then you are a partner, and then you are and usually VCs में क्या होता है, जब आप you will see more than one partners, right? Because different strategies हो सकती है, number of transaction आप जो करते हो, एक पार्टनर के लिए to be working with the promoter 6-7 कंपनीज बहुत होती है. एक फंड में यूजुअली 20 से 25 कंपनीज होती है, which means you need a couple of partners to run or monitor the portfolio once you have made the investment. So usually ये positions होती है, but on an average you could say from analyst to associate to principal to partner, it could take anywhere around 10 years. Okay. Arvind, can you share your key learnings being a VC? फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा. सेकंड क्वेश्चन ये है, काफी सारे बैक एंड, आपने बोला केपीओ से स्टार्ट किया मैंने, कैप्टिव से वीसी, सो काफी सारे बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एम्प्लॉयज भी फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं. सो अगर आप अपनी की लर्निंग्स बताएं, बैक एंड एम्प्लॉयज फ्रंट एंड में कैसे जा सकते हैं? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वहां पर, आई बिलीव इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ एस्पिरेशन, राइट, एंड आप वो आईवी लीग से नहीं हो जहां पर आपको ऑटोमेटिक एंट्री मिल सकती है, you will have to invest in yourself. So when I say invest in yourself, I don't mean कि आपको ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, वो सेकेंडरी हो जाता है. जो मैंने अपने स्टार्टिंग के करियर में किया था, I didn't created lot of liabilities. Okay? उससे हुआ क्या, I had lot of flexibility. तो जब मैं I'll tell you when I was moving from one job to another, मुझे पता था कि आई एम टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज मैं केपीओ से कैप्टिव में जा रहा हूँ, वहां से मैं फ्रंट एंडिंग वीसी में जा रहा हूँ. एट टाइम्स यू हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, राइट. तो मैं एक्चुअली एक एसोसिएट था कैप्टिव में, एंड देन आई जॉइंड अ वीसी फंड एज एन एनालिस्ट. Okay. So you might have to take a hit in terms of designation. You might have to take a hit in terms of salary, pay cut and all, right? हम ज्यादातर मैंने क्या देखा है, आपको फर्स्ट जॉब मिलता है, इनकम हुआ नहीं, उसके पहले हम लाइबिलिटीज खड़ी करने शुरू कर देते हैं. गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो. तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है टू मेक दीज टाइप ऑफ करियर चॉइसेस. तो अगर वो एस्पिरेशंस है और ये लॉन्ग पाथ लेना है, डोंट क्रिएट लॉट ऑफ लाइबिलिटीज फॉर यू. कीप मनी विच यू कैन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. Okay, very, very good point, Arvind, I must say. Arvind, let me ask you a couple of personal questions. Yeah. क्या VCs को भी कभी फोमो होता है? मुझे लगता है फोमो से ज्यादा वीसीज को डर लगता है कि गलत कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है. अच्छी डील छूट जाए कोई बात नहीं है, वो तो एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन, रातों को शायद नींद नहीं आएगी. गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5-6 साल नींद नहीं आती. ओके अरविंद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी ऐसे लगा कि यार मैं इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता था पर दूसरा वीसी इसमें इन्वेस्ट करके उड़ा के ले गया कंपनी? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है वरुण, क्योंकि हम लोग जो स्ट्रेटजी हम लोग फोकस करते हैं वो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का है. वी फोकस ऑन सोशल एंटरप्रेन्योर. क्राउडेड नहीं है बहुत ज्यादा मार्केट, एंड हम वो जो टेक वाला जो मार्केटिंग चल रहा है अभी, हम उससे भी दूर रहते हैं. तो वो लड़ाई वाली बात नहीं होती है, एटलीस्ट हमारे स्पेस में जहां हम ऑपरेट करते हैं. बट आई गेस सेक्टर में ये बहुत कॉमन है. ओके अरविंद, एक और पर्सनल क्वेश्चन है मेरा. मैं काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलता हूँ और
लास्ट टाइम मैं अभी किसी के साथ बैठा तो काफी हम ग्रुप में उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम किसी वीसी को अगर आप बुलाएं शो पे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछना, व्हाई सो मच लव टुवर्ड्स दिस सेलिब्रिटीहुड ऑफ बीइंग अ वीसी? Why so much love? व्हाई डू वीसीज बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी? ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स का है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, अगर कभी कोई वीसी शो पर आए तो ये क्वेश्चन पूछना। यार वरुण, ये क्वेश्चन तो मेरा भी है। तो अगली बार कोई वीसी से बात करो ना तो उनसे पूछना, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन आई थिंक वीसीज ने ऐसा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, एक तो उनका जो रेस्पेक्ट होना चाहिए था एज अ प्रमोटर, एज एन एंटरप्रेन्योर, वो नहीं होता है। Right, you don't gain anything out of it. At least I have not seen people gain anything out of it. So I honestly don't know why VCs behave that way. But yes, I have seen my experience, because all my life I have been directly or indirectly connected with this world. I have seen that. And honestly, they should just shed this as soon as possible, and they will be doing good to themselves. Wonderful, Arvind. Okay, Arvind, many startup founders must be watching this show today. How can they reach out to you if they have a startup idea? आपके तक कैसे पहुंचे वो, कैसे आपको पिच करें? तो वरुण, हमारा एक पॉलिसी है विच वी कॉल ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल वीसी जहां पर वीसी से कनेक्ट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमारा वो नहीं है। हमारा, मैं आई होप आई डोंट रिग्रेट सेइंग दिस लेटर ऑन, बट आई हैव माय ईमेल आईडी ऑन माय वेबसाइट। जस्ट गो देयर, सेंड मी एन ईमेल, यू हैव माय ईमेल आईडी। उसके बावजूद यू डोंट बिलीव, कि कहां कहां से घूम घूम के प्रपोजल आता है। नोबडी केयर्स टू, अरे एक बार वेबसाइट पे जाके देखो तो हम करते क्या है वो समझो तो। वो करने जाओगे तो आपको वहां पर मेरा ईमेल आईडी भी मिलेगा। यू डोंट हैव टू गो टू एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, यू डोंट हैव टू गो टू लिंक्डइन एंड ट्राई टू रीच आउट टू मी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। थोड़ा सा होमवर्क करना जरूरी है सबके लिए। आज की डेट में कारपेट बॉम्बिंग वाला स्ट्रेटजी इतना हो गया है वरुण, कि लोग थोड़ा सा होमवर्क नहीं करते। अगर थोड़ा सा होमवर्क करें, फॉर फाउंडर्स एंड फॉर वीसीज, लाइफ विल बी वेरी इजी। Wonderful, wonderful. Arvind, so we are about to end our show and we have a custom to ask your life around blue gear moment. I mean, see, I signed up for this, and as you know, VC career, as I said, it takes a toll on you. Right? There's no difference between your personal life and professional life. So I never complained about that. In fact, I enjoyed it. However, there is one incident which kind of shook me. Right, after I moved to, so होता है ना कि आप VC में जाना चाहते हो, and through KPO, through captive, and you actually end up in a VC, which happened with me. After a year, I was getting into depression. I like कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे इंसान क्यों नहीं समझा जा रहा है? And if I can do so much, why shouldn't I do this for myself? And that was the moment I actually decided to leave everything, retire from the career. And this is, I was in UAE. मैंने अपनी जॉब छोड़ी, रेजिग्नेशन दिया, आई वेंट बैक टू माय होम टाउन धनबाद, स्टार्टेड अ रूरल बीपीओ। लाइक मुझे उस दुनिया में वापस जाना ही नहीं है। It was a complete disaster in terms of the rural BPO, but that taught me an important lesson that, being a VC or being into investments and at the same time enjoying your work, both could happen. Because when I was in Dhanbad trying to make the rural BPO work, it gave me immense happiness despite failing as a first time promoter. Gave me enough immense happiness. यार ये इतना मजा क्यों आया फेल करने में? एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब में वापस जाना था, एंड आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस लार्ज वीसीज, वो जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें नहीं जाना। आई डोंट वांट टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ ह्यूज मशीन। एंड आई डिसाइडेड कि मैं आई ट्राई टू लुक फॉर अ वेरी स्टार्टअप टाइप ऑफ अ वीसी व्हिच इज फोकसिंग ऑन smaller investments and not very commercialized. And I think that changed everything, because now I have kind of combined both what I enjoy, in terms of work and my VC aspirations. So I think that was the moment. And sometimes, you have to go through that phase where you need a knee-jerk event to shake you.
तब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो, एंड देन यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव. सो आई थिंक एट द एज ऑफ 35 I got my new perspective and started my career all over again. Wonderful, wonderful journey, Arvind. And thank you so much for your time today. And all of you who are watching us, if you are a student, you set your career journey. If you want to become a VC, Arvind has is a set example in front of you. And if you are a startup founder, you want to reach out to Arvind for your fundraising. Arvind is very receptive. He has already shared his email ID on his website. Why don't you reach out to him? But please don't bombard his email ID. And in the end, if you have any comments which you want to share with Arvind, please do drop in your comments and we'll see you soon. Thank you. Thank Thanks, you. Arvind.